दुश्मन सुन ले, छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। मुकद्दस सरजमीन के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ललकार। पासिंग आउट परेड से खिताब में दुश्मन को खबरदार किया कि दोबारा जारहियत की कोशिश की तो जवाब तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त होगा। न्यूक्लियर एनवायरमेंट में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। अजली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया। दिफाई निजाम S-400 समेत मुतअद्दिद फौजी अड्डों को निशाना बनाया। भारत ने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। उनकी धमकियों से कभी खौफजदा नहीं होंगे। The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-u-Marsus, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s, and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. With Allah's blessings and binding national resolve, people of all hues and colors, age, gender, ethnicity, or creed stood firm and tall like a wall of steel, leading to a renewed spirit of patriotism and national fervor, which prevails across the length and breadth of Pakistan. Our collective success has re-energized and strengthened the proud and illustrious memories of our earlier successes. Pakistan once again came out victorious against a treacherous enemy marked by strategic blindness and naivety and filled with hubris and rhetoric about its misguided hegemonic ambitions. India's eagerness to adjudge culpability, evasion of neutral investigations, and staging self-created evidence was indicative of politicization of terrorism for vested interests of the ruling regime. Pakistan, on the other hand, gained deep respect and admiration of the people of Pakistan and international community because of the legitimacy and clear victory against a numerically superior adversary. Internally, it has further unified our nation and strengthened our resolve to defend against any threat, whether external or internal. It has reinforced the confidence, particularly amongst the youth, that the armed forces of Pakistan are an essential element of national power and trusted with the responsibility to protect the sovereignty and territorial integrity of the state. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. Pakistan would respond much beyond the expectations of the initiators. With diminishing distinction between combat and communication zones, the reach and lethality of our weapon systems will shatter the misconceived immunity of India's geographic vastness. The deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculations of the perpetrators of chaos and instability. अब आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक। तालिबान हुकूमत दायमी तशद्दुद के बजाय बामी तहफ़्फ़ुज़ का इंतखाब करे। भारत की हर प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। कहा, जैसे रवायती महाज पर कामयाबी समेटी वैसे ही इन प्रॉक्सीज को भी शिकस्त देंगे। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती पॉलिसी के तौर पर अपनाया है। दुनिया के सामने भारत के मकरू, मुनाफिकाना और संगदिल चेहरे को बेनकाब कर दिया।
failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust. सिर्फ यही नहीं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मजीद कहा कि अंदरूनी और बैरूनी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के खतरात तेजी से फैल रहे हैं। आधा सच सच्चाई से ज्यादा तेज फैलता है। जिस दौर में रह रहे हैं, हकीकत से ज्यादा तासुर की अहमियत बढ़ गई है। नौजवान खुद को इत्तलाती इंतशार का शिकार ना बनाएं। Be cognizant of the diverse array of threats within and beyond, which are proliferating via digital media, populist anarchism, and social subversion. Unfortunately, in the post-truth era in which we live, perceptions bear more weight than reality, and half-truths spread faster than facts. Your strength will lie in thinking critically and discerning fact from fictions. Do not become tools and victims of information disorder, encompassing fake news, misinformation, disinformation, and malinformation. You must develop clarity, as in today's world, clarity of mind is power. पाकिस्तान ने खवारिज गुल बहादुर ग्रुप के मुसद्दक़ा कैंपों को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा सीज़ फायर के दौरान अफगानिस्तान से खवारिज ने पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमलों की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाइयों के जरिए हमला नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाइयों में 100 से ज़ायद खवारिज हलाक किए गए। शहरियों को निशाना बनाने से मुतालिक तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुड और बैड तालिबान की थ्योरी नाकाम हो चुकी। अब वो दहशतगर्द हैं या नहीं हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़े कर दिया। कहा कि पाकिस्तान कभी जंग में पहल नहीं करेगा, जाहिरियत पर उधार भी नहीं रखेगा, किसी को मैली आंख से नहीं देखने देंगे। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान 3 बार हलाकतें हुई। पंजाब हुकूमत की पाबंदी की सिफारिश पर वफाकी काबीना अपना फैसला करेगी।